Good morning. Good morning, students. Again, I am here with the new chapter, motivation skills. So today we will be learning what is motivation and motivation क्यों required है. Okay. So coming up with this chapter. Now talk about motivation. What is motivation? You can see in this picture. You can see exactly in this picture motivation किससे आता है और क्यों आता है. मोटिवेशन, अगर आपके पास मोटिवेशन आने के लिए फर्स्ट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इज यू शुड हैव अ ड्रीम, यू शुड हैव गोल्स विद यू, राइट. वंस यू हैव गोल्स, आपके पास अगर गोल्स हैं, आपके पास कोई राह है, तो आपके पास ड्रीम है, आपके पास गोल्स हैं, देन इट इज़ वेरी गुड फॉर यू बिकॉज यू नो कि हमें कहाँ चलना है, कहाँ जाना है, और उस को जाने के लिए, वो कंटिन्यूशन के लिए हमें मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है. एंड मोटिवेशन मेनी टाइम्स मोटिवेशन होता है, बट अगेन मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें इसलिए होती है कि बिकॉज हमें पॉजिटिव स्टे करना है. When you are staying positive, when you know that yes, I am positive and yes, I have the energy to talk to people, to tell them that yes, this is right and this is wrong, that is motivation. Because motivation का सबसे बड़ा अर्थ होता है कि you have confidence in yourself, right? You should have courage to speak, right? And this is what is motivation. So once if you stay positive, you have goals with you, you have a dream with you, then you have the thing to stay motivation. Yeah, this is actually the motivation. So come now, let's talk about the definition. Definition is, it is one of the most critical skills for effective leadership and management because you have to motivate others. अपने आप को मोटिवेट करना is difficult, right? But yes, if you are motivated only then you can motivate others. Because अगर आपके पास अपने लिए हिम्मत नहीं है तो फिर आप दूसरों को क्या हिम्मत दोगे? So it is again a very big responsibility on your shoulders when you talk about that you have to motivate others with a good human energy. Because so motive, again as I have spoken in the last slide, जैसे मैंने बताया था, you should have a motive. A motive is required, a need, a desire or an impulse that brings about in an action. अगर आपके पास action है तो ही motivation हो सकता है. You should have a need. किसी को जब हमें किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, जब हमारी नीड होती है तो हम उसके लिए एक्शंस करते हैं. अगर हमारी कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो हम उस दिशा में आगे काम करते. वी वर्क इन दैट डायरेक्शन. सो अ मोटिव इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी स्मॉल वर्क, right? Motivation refers to those wishes, desires, and that stimulates, because these desires, they stimulate people, right? These desires, these wishes, they stimulate you to tell you that yes, now you have to work. और जब काम करना है तो इसका मतलब ये है कि जब काम करना है तो उसके लिए मोटिवेशन रिक्वायर्ड होगा. बिकॉज मोटिवेशन अगर नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू वर्क इन द एक्चुअल डायरेक्शन. ओके, अगेन नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन. As you all know that sources of motivation can be many, right? As I've spoken you अभी जैसे मैंने बताया अभी आपको कि motive एक हमारे पास एक need होती है. For example, if we speak about अगर if we have a need of your food, clothing and shelter, रोटी, कपड़ा और मकान, this is a basic need every human being requires, राइट. सो उस रोटी कपड़ा मकान के लिए जब वो नीड है हमारी, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है, और अगर वो नहीं करेंगे तो अगेन वी विल बी फॉलिंग बैक. सो अगर उन चीज़ों को पूरा करना है तो अगेन वी नीड मोटिवेशन. सो दैट इज़ अ बेसिक नीड. येस, वी नो दैट, बट येस, अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक नीड वी हैव अदर नीड्स टू. वी शुड टॉक अबाउट लाइक हियर एज वी नो इन ऑर्गेनाइजेशंस. अगर मैं आपसे बात करती हूँ, अगर मैं बोलती हूँ कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में हैं, इफ़ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, देन वी शुड हैव दीज incentives, these incentive part, growth part, rewards, fear, okay, achievements. We should have all these in continuation with us, because अगर ये रहेंगी तो हमें काम करने की एक जो
you will be motivated, you will get an energy to work in, because when you work in an organization, when you find that yes, अगर आपसे कोई गलती हुई है, you have a fear कि yes मुझे somebody will tell me that yes, I have done wrong, या मुझे डांट पड़ेगी, I will get a punishment. That is what is fear, one of the sources of motivation. Yes, you know that एक बार आपको punishment मिला तो next time what you will think that yes, now I will do something better, right? Now again, incentive and rewards. अगर if you have done something very good, you done something very extremely very good, then you get incentives, you get rewards, right? You are being given incentives. You're given awards in the classes, also in the organizations, also everywhere. Now social, in society your name is there, you have a good name in society, people know you with your name. So these are the social sources of motivation, because once people know you that yes, you are there, you're working there, so that is something very good for you. And if you have a name, you feel very good in your mind that yes, I have a name and this is something very good for me. Okay, power. Again, motivation, power has a very good relation, a direct relation with motivation, because when you have power in your hand, when you have power in your hand, you know that now yes, I can do something, I can take decisions, I have the ability to take decisions, right? So this is something a very good thing to get motivated with. So when you have power in your hand, you know that yes, I have the ability to take decisions, people have trust on me, and then with these things you get motivated. Okay, growth. Again, if you're working in an organization and again you are getting growth in a career, again this will keep you motivated, this will keep you energetic, right? Achievements. Okay, when you achieve something in life, once you achieve the ladder of moving upwards, तो सीढ़ी होती है ना, एक चीज़ पाली, फिर हमें दूसरी पानी है, फिर हमें तीसरी पानी है. So in this manner, right, we try to achieve things, right? क्योंकि achievement एक जगह stop नहीं होता है. Achievement moves on. It moves on with further things, right? Okay. So now move to the other slide. What is initiative? When we talk about मोटिवेशन, जिसे मैंने आपको बताया भी है कि मोटिवेशन के लिए हमारे पास एक मोटिव होना ज़रूरी है. एक यू शुड हैव सम गोल इन योर माइंड कि मुझे ये काम करना है, right? In the same manner, you should have initiatives to work in. The ability to solve the problems. Ability to solve a problem on your own. Because when you have ability to solve problems, taking actions, right, by thinking on yourself, when you think on yourself, when you keep your burden on your mind, yes, ये चीज़ मुझे करनी है, मुझे अपने आप से करनी है, without taking the help of your juniors or seniors or anybody in your organization, then that is an initiative. Okay, because you are taking initiative for your own, you are trying to prove yourself. So when you try to prove yourself, you try to take initiative on your own, you try to take problems and try to solve them on your own, and once you solve them, so this is a successful initiative which you take. Okay, now willingness of work. What is willingness of work? Willingness of work का मतलब है काम करने की इच्छा शक्ति, राइट? हमारे अंदर हमारी जो इच्छा शक्ति है वो है कि नहीं है. फर्स्ट थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू पीपल दैट हमारी जो विलिंगनेस है, हमारी एनी मोटिव, एनी गोल, एनी ड्रीम, एनी इनिशिएटिव, कोई भी चीज़ तभी पूरी हो सकती है जब विलिंगनेस होनी चाहिए हमारे अंदर, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव विलिंगनेस, right, you will not be able to do anything in your life. अगर willingness है, अगर काम करने का मन है, तो ही आप उस काम में लगेंगे, आप उस काम को पूरा करेंगे. Otherwise you will stay at the same place and you will not do anything. Okay, so you need that willingness, you need that energy, or you need that kick. If I say, वो kick मिलना हमें बहुत ज़रूरी होता है, I believe. Okay, so willingness is something which is, as I've told you people, that willingness is a state of being prepared to do something.
हमें कोई काम करने के लिए हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है, एंड उस प्रिपरेशन के लिए इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि हमारे पास वो प्रिपरेशन होनी चाहिए. विलिंगनेस इज क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग प्रिपेयर टू डू समथिंग. इफ़ यू वांट टू अचीव करियर सक्सेस यू हैव टू डू आपके पास विलिंगनेस ज़रूरी है. काम करने की इच्छा शक्ति होना ज़रूरी है अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं. लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फाइन आते हैं. बट येस अगेन हाउ यू ट्राई टू फेस देम, आप उनको फेस कैसे करते हो. आप उन चैलेंजेस को देख के, उन प्रॉब्लम्स को देख के डर के यू वांट टू सिट एट होम एंड यू वांट टू रेस्ट, or you fight with them. You should fight with them. This is I just want to tell you people why, because when you fight with them then you get the courage, then you get हिम्मत हमें मिलती है कि yes हम इस काम को कर सकते हैं और हम इससे आगे कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो दैट इज विलिंगनेस, और वो विलिंगनेस हमें लानी पड़ेगी अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस पानी है. ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ विलिंगनेस टू वर्क. अगेन पर्सनल लाइफ में मैंने जैसे बताया कि अगर हमें सक्सेस पानी है वी नीड टू वर्क, राइट. हमारे पास काम करने के लिए हमारा मन होना चाहिए. हम उस काम को करने के लिए खुद आगे बढ़ेंगे तभी वो काम हो पाएगा. इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, अगर वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ओवर हियर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यू आर वर्किंग, आइदर यू आर वर्किंग एट होम और यू आर वर्किंग इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, then you need to look into the picture that yes you have that willingness. Okay, you should have teamwork, right. जब हम टीम में काम करते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, we need to focus on that. We need to work with the team. हमें अकेले काम नहीं करना है, we have to work with the team here, right. So जब हमें टीम के साथ में काम करना है तो we need to look into the picture that yes am I being accepted by the people in the organization or not. क्या मेरा behavior ऐसा तो नहीं है कि people in the organization are not able to accept me. Okay, you need to look into this thing. Okay, secondly what you need to look is that yes your employees morale, you need to look, see you are working with the people in the organization, you need to focus on this thing that yes whatever you are speaking you should have you should think in mind first and then speak, because whatever you are speaking, ये चीज़ याद रखिए कि when you speak जो भी आप बोलते हैं something कुछ छोटा या बड़ा, something not very important also, फिर भी वो चीज़ें सामने वाले पे impact डालती हैं. Okay, and promotes productivity and efficiency. आप जो भी बोलते हैं, आप जो भी कर रहे हैं साथ में, when you work in a team you need to focus this thing that whatever you speak, whatever you do something positive, you speak something positive, so that the people working with you they should get an energy, they should get positive energy and they should उनकी productivity increase हो, right. उनकी efficiency increase होनी चाहिए. They should not think कि no दे शुड नॉट फील लिथार्जिक, उनको लिथार्जिक नहीं लगना चाहिए, नहीं वी शुड नॉट वर्क, राइट. उनको आप उनके साथ अगर काम कर रहे हैं तो आप उनको फील कराइए कि येस यू आर समथिंग एंड यू कैन डू दिस थिंग. प्लीज डोंट टेल, इंक्रीज देयर मोरल्स प्लीज. ओके, नाउ employees who get to know each other feel empowered to seek knowledge of their colleagues, because when you work together, remember one thing, when you work together with your other employees also, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें आती हैं, but yes when you work in a team you learn many things, so you try to work in a team please always, which in turn helps to deal with situations at work, because बहुत सारी situations हमारी लाइफ में ऐसी आती हैं जिसमें हमें we stand in a position, what decisions should I take, क्या मुझे करना चाहिए. कभी कभी हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, but we should stand positively and we should जब हम सबके साथ में मिलके काम करेंगे तो हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटीज़ है वो इंक्रीज होंगी and we will learn many things. So this is something which you should do in an organization, and this is how you will do with the willingness of work,
When you have willingness in your mind, then only you can create willingness in other people. Okay? Now, eagerness to take on work. What is eagerness? Eagerness का मतलब क्या होते हैं? Eagerness is something when you are eager, right? कोई भी चीज़ हमें चाहिए होती है, any चीज़, anything, any requirement we have. In the organizations we work, where we have an eager, we know that yes, at the end of the month we will be getting some remuneration. हमें कुछ पैसे मिलेंगे, we will be getting paid for it, right? The work which we are doing. This is something, yes, this is one of the, you can say this thing motivates you. But apart from this, something which makes you eager, makes you do something good is you whatever you're doing, is it impacting other people in around you or not? Okay, you have to show them that yes, you have the energy to work in, you have the positive energy to work in, right? Show them your eagerness, because until and unless you will not show them that you want to work, yes, you are very eager to work with this organization or with this thing, yes, you want to work in this project, right? People will not understand that thing. Okay, stay updated always. Try to always stay updated. You stay updated with current news and everything which is going on. Okay, so don't stop developing your skills. Always develop your skills. Try to develop your skills, like always try to learn more and more. Look for challenges. Always look for more and more challenges, because जैसे जैसे challenges आपकी life में आते जाएंगे, you will start learning more and more. Okay, for an example, this online mode of media, online mode of studying is also one of the challenges. But yes, with time we learnt a lot, and we try to tell people a lot also. Okay, learn lateral thinking again. Lateral thinking, learning and let people other also learn. Okay, be open to new experiences. Never say no to new experiences, please, because new experiences bring energy in you, tells you that yes, you are important, and you also learn many things with this. Okay, so with this I will say bye to everybody, and we will be meeting in the next class. Okay.